Hey guys, welcome back to my channel, and in today's video I'm gonna show you how to achieve this beautiful grey look. Don't forget to like, share and comment if you like the video. Also subscribe to my channel and hit that bell icon so that you will be notified for other future updates. तो सबसे पहले आई लुक शुरू करने के लिए मैं अपनी लिड्स को प्रिपेयर करूँगी बाय अप्लाइंग एंड ब्लेंडिंग द कंसीलर ऑन द आईलिड्स एंड देन सेटिंग इट अप विद द लूज पाउडर. सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट मैं ग्रे आई शैडो लेके उसे अपने क्रीज एरिया में अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी. आप चाहे कोई सा भी ग्रे शैडो यूज़ कर सकते हैं, या जैसे कि मैंने किया क्योंकि मेरे पास ग्रे आई शैडो नहीं था तो आई मिक्स्ड ब्लैक एंड वाइट आई शैडो टुगेदर टू गेट दिस ब्यूटीफुल ग्रे शेड. आप ब्लैक आई शैडो का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि आप उसको बहुत ही हल्का सा लेके फिर उसको ग्रेजुअली बिल्ड करें. नेक्स्ट आई टेक दिस वाइट आई शैडो और मैं इसे अपने लिड एरिया को कवर करने के लिए यूज़ करूँगी. And then I'll blend it out using the same brush. Also, I'll use the same brush to smoke out my lower lash line. नेक्स्ट मैं ये ब्लैक आई शैडो लेके इसे अपने eyeliner की तरह यूज़ करूँगी. This will give my actual eyeliner a smoke effect, and I will use the same on my lower lash line as well. Now I'll apply my winged eyeliner. For the lips मैं ये mauve wine shade यूज़ करूँगी, and to give it that extra shine I'll apply this shimmer shade in the center. For the final step I'll curl my lashes and apply some falsies. And here's the finished look. I hope आपको ये look पसंद आया हो. कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आगे आप क्या क्या देखना चाहेंगे. Also do like and share the video and subscribe to my channel. See you in my next one. Till then, bye bye.